सर चालू कर दिए। देखो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू द सेंट्रल टेंडेंसी। और इन लास्ट क्लास हमने आपको बतलाया था कि सेंट्रल टेंडेंसी डिटरमाइंस सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल यूनिट वैल्यू of any data. In research, you collected the data either by the laboratory work or by the sampling, and in this way you collected the data, and the data may be dispersed or represents variability from lower to or from minimum to maximum value, and it may be, if you plotted by the dot lines or by the unit values, that suppose this is the dispersion, the value is dispersed here, the variables, and here the value of variable x, and that degree of variability, that is the degree of variability, that is the degree of variability. And in this way it is very difficult to mention all the scores in your paper or in your writing. So we determine a central value. Suppose this one is the x, and the central value is represented as the by three methods. One is mean, another is median, and third one is mode. That is, mean is the arithmetic central value or arithmetic average. Mean is the arithmetic central value. The median is the positional central value, and the mode determines the trend of data. Mode determines the trend of data. Mean is represented by x bar, median is represented by me, and mode is represented by mo. That is mean, median, and mode. And here the dispersion, if dispersion is plotted in the graphical forms, it represents a linear line. That is represented as the distribution curve. Which we will discuss in later classes. हम लोग बाद के क्लास में उसको पढ़ेंगे कि जो इसका कर्व होता है, जैसे बुक्स वगैरह में आप देखिएगा, इफ यू गो थ्रू द बुक्स, particularly if you go through the NCERT books, you observed this one graph, like this. You observe like this graph, and the graph is represented as distribution graph. It is represented as distribution graph. It is represented as distribution graph, and the distribution graph is divided the nature of the variability or nature of the population with respect to the variable studied. If it is symmetrical with respect to the x bar means that is the mean, and it is equal to the median and it is equal to the mode, then it represents the normal pattern of distribution. And it represents that the population is in a stable condition with respect to that particular variable.
जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को आप स्टडी कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में वो जो पॉपुलेशन है वो क्या है, स्टेबल है, यानी नॉर्मल है। वो क्या है, स्टेबल है। एंड इफ द मीन इज नॉट इक्वल टू मीडियन और मोड, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द स्क्यूनेस, इट रिप्रेजेंट्स द स्क्यूनेस, like this or like this. That is the A, that is the B, that is the C. It represents as the positive skewed graph, and it represents as the negative skewed graph. So the mean, median and mode are most important statistical method for the analysis of, for the further analysis of data, for the further analysis of data. And of course, in the majority of the statistical methods, it provides the basis for the calculation. Of course, it is significant for the descriptive part of the statistics, but it is also useful, or most useful factors that is responsible for the further statistical analysis of your data. So, we observe the mean and median and mode sequentially. At first, we observe the mean. Then, what is the principle of mean? What is the principle of mean? It is very simple. What is the principle of mean? What is the principle of mean? It represents the arithmetic average. Arithmetic average. It is very simple. It represents the arithmetic average. Arithmetic average जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, mean. And arithmetic average मतलब कि you sum up all the scores. Suppose a sample represents the x by x1, x2, x3 to xn. Okay? X is represented by x1, x2, xn. Suppose जैसे कि मान लीजिए कि हम बोले आपको you go and weight the students of the second semester. आप सेकेंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट को क्या कर लिए, वेट ले लिए. तो दैट एक्स, वो एक्स क्या हो गया, वेट. एक्स क्या हो गया, वेट. अब उस वो जो एक्स आपका है, जो जिसको आप क्या आप बोल रहे हैं, वेट. वेट जिसको आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें कितने होंगे, 20, 25, 50 जो भी लड़के आए हैं सबका आपने वेट लिया. तो क्या हो गया, अलग अलग हो गया सबका. तो वो क्या हो गया, x1 टू xn. मतलब x1 पहला से लेके अगर 50 लड़के हैं तो x50, दैट इज द xn. लास्ट जो होगा वो क्या होगा, xn. तो सपोज x इज द xn. नाउ यू कैलकुलेट द x बार एंड प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल, दैट इज रिप्रेजेंट्स द अरिथमेटिक एवरेज. इट रिप्रेजेंट्स द अरिथमेटिक एवरेज. दैट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn divided by n. Divided by n. That is the arithmetic average, and it is represented the arithmetic mean. It represents the arithmetic mean. That means here all the structure is represented by capital Greek sigma. It is the capital Greek sigma, and here it is represented by I1. Lower subscript is represented by I1. That means हम कहाँ से उसको ले रहे हैं, फर्स्ट से. एन कहाँ तक ले रहे हैं, एन तक. ठीक है. एक्स आई सभी एक्स आई हो गए. एन डिवाइडेड बाई एन, डिवाइडेड बाई एन. इट इज रिप्रेजेंटेड द अरिथमेटिक मीन ऑन द बेसिक ऑफ द दिस प्रिंसिपल. वेरी सिंपल प्रिंसिपल. इसका मैथमेटिकल प्रिंसिपल क्या है, बहुत इजी है. इसको आपने क्या किया, सम कम कर दिया और डिवाइड कर दिया इन से. तो ये क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन. बट इन सम टाइम्स it is very difficult to calculate the all populations.
जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने आपको बोला कि आप अगर लिख रहे हैं कि यू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द हाइट ऑफ द स्टूडेंट क्या सेकेंड सेमेस्टर, तो जिस दिन आप ये काम कर रहे हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कि सभी लड़के वहां पे हों, तो आप क्या करेंगे, उसमें से कुछ लड़के को आप सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ लड़के को आप सेलेक्ट कर लेंगे। दैट मीन्स सब सेट ऑफ द पॉपुलेशन। इस सब चीज को समझिए टेक्निकली, इट इज माई फर्स्ट क्लास फॉर इन दिस सेक्शन। तो जो पूरे इंडिविजुअल्स हो गए, मतलब यहाँ पर स्पेसिफाइड एरिया, स्पेसिफाइड टाइम, आपने एरिया को स्पेसिफाई कर दिया, आपने टाइम को स्पेसिफाई कर दिया। क्योंकि अगर आपके क्लास का हम सेकेंड सेमेस्टर की बात बोल रहे हैं तो वो स्पेसिफाई है कि सेमेस्टर इसका, मतलब सत्र, इस सत्र का, तो टाइम वहाँ पे क्या है, स्पेसिफाई है। एरिया क्या है, जो लड़के सेकेंड सेमेस्टर में हैं, तो वहाँ पे एरिया और टाइम जो है वो स्पेसिफाई हो गया विथ रेस्पेक्ट टू द सेलेक्टेड पैरामीटर, विथ रेस्पेक्ट टू द सेलेक्टेड पैरामीटर। पैरामीटर क्या हो गया यहाँ पे, हाइट। पैरामीटर यहाँ पे क्या हो गया, हाइट। तो विथ रेस्पेक्ट टू द सेलेक्टेड पैरामीटर यू ऑल individuals of defined area and time is referred as population। इसको हम क्या बोलते हैं, population। स्टैटिस्टिक्स में, इन किस चीज में, इन बायो स्टैटिस्टिकल स्टडी और इन स्टैटिस्टिक्स द ऑल कंपोनेंट्स आर रेफर्ड एज पॉपुलेशन। अगर आपका इकोलॉजी का पॉपुलेशन होगा तो फिर वो उसका अलग डिफिनेशन होगा, अगर पॉपुलेशन डायनामिक्स का पॉपुलेशन होगा तो उसका अलग डिफिनेशन होगा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स के बारे में जब बोला जा रहा है तो द टोटल इंडिविजुअल्स अवेलेबल इन द टाइम ऑफ स्पेसिफाइड एरिया एंड स्पेसिफाइड टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। तो द पॉपुलेशन, अब सपोज करें कि पूरे पॉपुलेशन को संभव नहीं है तो हम क्या करेंगे, वहां से कुछ पॉपुलेशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे फॉर द स्टडी। तो वो जो हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल। उस चीज को हम क्या बोलेंगे, सैंपल। तो द स्मॉल सैंपल इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सैंपल क्या हो गया, हाँ, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सेट पढ़े होइएगा आप लोग 10 वगैरह में, 10 क्लास में होगा, 11th में होगा, और 11th में अगर मैथ होगा तो आपको पढ़े होंगे। सेट थ्योरी पढ़ना है 9-10 वगैरह में होगा। तो समुच्चय, हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं, समुच्चय। तो जो सेट है, सबसेट of the population is referred as sample, and when you use the sample then it is, the symbol is modified as I1 xi divided by n minus 1 divided by subtracted by minus 1. That means it is referred as, it is not simply the one, it is statistically referred as the degree of freedom, which will हम लोग आगे देखेंगे, ये आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। एट प्रेजेंट यू रिमेंबर दैट n-1 in this condition is not the mathematical but it's a statistical factor and referred as degree of freedom। इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम, we use the degree of freedom instead of the total number to determine the accuracy of calculation, ये हम बाद में देखेंगे। दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम वाज, कॉन्सेप्ट ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम वाज प्रेजेंटेड बाय द एल्मर, ये बाद में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। Now it is very simple, but if suppose if you collected the 1000 or 2000 samples, or you want to analyze the 1000 and 2000 samples or data of the 1000 scores or 500 scores or 300 scores, and in this condition you feel some problem, ठीक है। and now it is referred as frequency distribution series, frequency distribution series।
frequency distribution series. And in the frequency distribution series, the variable is represented by x. Variable is represented by x. Or if the two variables are present, then it is represented by x and y. If the three are present, then it is they are represented by x, y, and z, like this. And here the variable is more in number. यहाँ पे क्या है? Variables के जो scores है वो बहुत ज़्यादा है, large numbers on that. Then the variables is always represented by the frequency. Represented by frequency. And if the scores or variables are represented by the frequency, then the table is referred as frequency distribution table or frequency distribution series. And on the basis of the frequency distribution, it is the series. अब यहाँ पे हम जो टेबलेशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सीरीज. Series are represented in the three forms. That is, first, individual series. Discrete series. And continuous series. Individual series, discrete series, and continuous series. Just we studied the individual series because each score is represented by its respective value. हमने अभी क्या बोला कि आपके अगर 10 लड़के को आपने चुना तो हर एक लड़के के सामने आपने क्या लिखा? उसका रेस्पेक्टिव वेट. तो यहाँ पे जो सीरीज बन रहा है ये कैसा बन रहा है? इंडिविजुअल. ये कैसा बन रहा है? इंडिविजुअल सीरीज. बिकॉज each individual variable is represented by its respective value. हर एक इंडिविजुअल, जैसे x1 का अपना वैल्यू है, x2 का अपना वैल्यू है, x3 का अपना वैल्यू है. ठीक है. तो यहाँ पे जो सीरीज बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सीरीज. तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या हो गया? ये क्या हुआ कि xi is represented independently. ये कहाँ है? ये independently represent हो रहा है. In second, in the discrete series, the each score xi is represented by respective frequency. Is represented by respective frequency. Suppose if you are you want to count the leaf of plant, तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा. कंपाउंड अगर होगा तो प्लांट हो गया. तो वहां पे क्या हो गया? 1 वाले कितने हैं, 2 वाले कितने हैं, 4 वाले कितने हैं. ठीक है. तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ लीव्स रिप्रेजेंट द discrete nature. Yeah, if you want to study the number of individuals in family, ठीक है, तो 2 वाले कितने हैं, 4 वाले कितने हैं, 5 वाले कितने हैं, ये पता चल जाएगा. और now you multiply the value. It is simple. ठीक है. अभी हमारा है तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब वहाँ कैलकुलेट हो जाएगा. एंड थर्ड वन इज द कंटिन्यूअस सीरीज. In continuous series, variable is represented in class interval. And each class interval is represented by respective frequency. Is represented by respective frequency.
Respective frequency. Respective frequency. Each class interval is represented by respective frequency. Clear? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. Now, in the second condition, that is the discrete series. And just I am saying that in the discrete series, each variable is represented by respected frequency. And what is the formula for the individual series? Individual series represents x bar summation I1 n xi divided by n. It is for the individual series. It is for the individual series. And suppose here derivation of formula. Suppose यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगा. If the x is of 5 times, xi is of 5 times और x1 is of 5 times. अब 100 आपने जो सैंपल लिया उसमें जो x1 का वैल्यू है वो उस पूरे 100 में 5 बार आ गया. तो that 5 is the frequency. That 5 is the frequency. And now it is useless to sum up the xi in 5 times. तब क्या है? यहाँ बेवकूफ़ी है कि उसको आप 5 बार जोड़िए. It is better to multiply it. 2 को 5 बार लिखिए या 2 into 5 कर दीजिए. मैथमेटिकली कितना आएगा वो? 10 ही आएगा. तो now that means xi is converted into xi fi. xi fi means the variable multiplied by the respective frequency. Each variable is multiplied by respective frequency. Then I1n, and that is divided by N minus 1. no. Here n is converted into f. N is converted into f because you are not counting independently. 5 times is represented by respective frequency. The 1 is 5 times, 1 is 5 times, 1 is 5 times, 1 is 5 times, 1 is 5 times. That means n is converted into f. N is converted into f. That means here it is the summation of I1 and fi. Now the formula is converted like this. And it is the formula for the calculation of arithmetic mean for discrete series. It is for discrete series. Clear? Third one is continuous series. Third one is continuous series. And in the continuous series, I am just saying that the variable is represented in form of class interval. In which condition? In continuous series. In the condition of continuous series, it is converted into class interval. Class interval means has the lower limit and Upper limit. upper limit. Each variable is converted into the lower limit and upper limit. For example, 1 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12. Okay? It is the equal class interval. It is represented as the equal class interval. Sometimes in the examination of NET or in other competitive examination, the class interval is represented in the form of unequal class interval. In that condition, it is your duty to maintain the equal construct the equal class interval. Converted the series into the equal class interval. In some time, open
class interval is observed. Open class interval means in series it is mentioned that the more than L1 lower limit. Okay? More than lower limit. यहाँ पे and then more than lower limit के बाद जो होगा क्लास 2 फिर क्लास 3 ऐसे लाइक दिस एक ही लिखेगा वन इंट ओनली लोअर और इन सम टाइम इट इज रेफर्ड एज less than upper limit. In this condition, one is also present. It is referred as the open class interval series. It is referred as open class interval series. It is referred as open class interval series. And if you observe either the open class interval series or the unequal class interval, unequal class interval series, then it is your first duty to convert it into the equal class interval series. closed class interval series. Closed Class interval series. class interval series. It is your first duty. Okay? Then suppose in the class interval we have two values for each class. L1 upper limit or lower limit. So it is very difficult to calculate the arithmetic mean either by the use of the lower limit or by the use of the upper limit. In this condition, you at first observe the midpoint. And that midpoint is represented by xg or xm. In some book, xg is mentioned. Xg means x of gravity. Xm means x of midpoint. So there is no difference. In some books, xg is used. In some books, xm is used. जो भी यूज करिए, that is उससे कोई मतलब नहीं. And in this condition, the class interval is converted into the unit value. Class interval is converted into the unit value. And in this condition, now this one formula, because it is responsible for the discrete series, not discrete series, that means it is responsible for the frequency distribution. Frequency distribution. And now you put it here, x n I1 xgf divided by summation fi. I1 n. It is represented the arithmetic mean for the continuous series. Clear? These are the basis, mathematical principle and basis for the derivation of formula. And which is the most important. ये तो simple चीज है. अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, in your class, it is most important to you and properly understand what is the mathematical principle and what is the basis for the derivation of formula. जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो इस पे जो सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है, आपके एमएससी वगैरह में इस पे क्वेश्चंस सीधे सीधे आ जाते हैं आपके यहाँ के एग्जामिनेशंस में. बट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और इन अदर एग्जामिनेशंस, इवन कि इन यूपीएससी, अगर यूपीएससी का भी आप पीटी और मेंस देंगे तो वहाँ पे इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे एनालिटिकल एग्जामिनेशंस आने लगते हैं. तो जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी दिस. तो इस चीज़ को आप समझ लिए, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है. एंड नाउ on this basis, it is the second part. First is the introduction, second is the derivation, mathematical principle and derivation of formula. This is the formula. And after that, you represent the method of calculation. You represent the method of calculation. For the individual series, it is very simple. For the individual series, calculation of method is very simple. In the first step, you sum up all the scores. Clear? In the case of population, the sum up value या total value of the scores is divided by n value in the case of population and n minus 1 in the case of sample. In the case of sample and n minus 1 के बदले आप ये भी लिख सकते हैं divided by degree of freedom in the case of
In the case of sample. In the discrete series, क्या है कि each score, इसका फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कैलकुलेशन में मेथड में, the each score is multiplied by its respective frequency. First step. Second step, the multiplication value of the each scores and frequency are calculated. Are summed up. क्या हो जाएगा? Are summed up. And then the third step is we calculate the total value of the frequency. In the fourth step, the total multiplication value of the scores and frequency is divided by total of frequency. ठीक है? In continuous series, the method is again extended 1 point. In first step, you calculate the xg or xm value. In the case of equally distributed class interval series, and if the class interval is unequal or open frame, then at first the equal closed frame class interval series is constructed, then the xg or xm is determined. Second point, the each xm is multiplied by respective frequency. वही सेम चीज है, respective frequency. Third point, the each multiplication value of the frequency and variable are summed up. Fourth, next, the frequency of each class interval are summed up. वहाँ पे sum. Then the third या जो भी स्टेप होगा, fourth is divided by the जो भी होगा लास्ट वाला value of the जो भी आपके पास आ रहा है, ठीक है? In this way it is represented the respective frequency. नहीं, mean value of the continuous series, individual series, discrete series और continuous. ठीक है? इसके बाद आपको नोट्स में अगर एग्जामिनेशन में आ रहा है तो इसके बाद आपको क्या देना होगा? इलस्ट्रेशन. उसको हम क्या बोलते हैं? इलस्ट्रेशन. And illustration you will present at least one example, calculated example of the individual series, discrete series and continuous. ठीक है?